हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, हम आ गए हैं आज एक और नया टॉपिक लेकर के। लीनियर इक्वेशंस का वो टॉपिक जिसमें इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगी। डायरेक्ट ऐसा दिखेगा नहीं a1x plus b1y plus c1. It is not in the proper form, adjusted form. Then we have to make it by some transformation, just like standard form. So how we convert it and how we solve? Now let's start. First we want to start with the first sum. Here it is 7x upon xy. We can write like 7x upon xy minus 2y upon xy equals to 5. X and x cancel out, it will become 7 by y minus 2 by x equals to 5. Similarly, this one, if we take the same way, 8 upon y, 7 upon x equals to 15. We want in our standard form a1x plus b1y plus c1 equal to 0. यानी कि x और y कहाँ है? न्यूमरेटर में, और यहाँ पर x और y कहाँ है? डिनोमिनेटर में. थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, नो प्रॉब्लम. सपोज 1 upon y equals to a and 1 upon x equals to b. नया वेरिएबल मान लिया. So this equation is now converted to 7a 2b equals to 5 and 8a 7b equals to 50. Now you know how to calculate a and b. पहले a b निकाल लेंगे, a b को वापस कन्वर्ट कर देंगे x और y में, आंसर आ जाएगा. So how we solve? By elimination method first. Multiplying by 7, multiplying by 2 to make these two 14 and 14. So this equation is now 49a 14b 35, multiplying by 2 16a 14b 30. Now tell me, if add, when you add these two, 65a and here 65, that means a equals to 1. अब a आ गया, b निकालना आता ही. Substitute in any one. Suppose in first one, a equals to 1. 7 minus 2b equals to 5. So minus 2b equals to minus 2, b equals to 1. A equals to 1, b equals to 1. So what will be the answer of x and y? Now substitute what we assumed earlier. 1 upon y is now 1 and 1 upon x is now 1. Cross multiply, y equals to 1 and x equals to 1 is the answer. If you want to check, you can substitute x and y here. X and y here, you are getting the LHS equals to RHS. One more question. So in this way, let us take second sum. Here xy and here x and y. If you divide by xy to both the equations, what we are getting? 6 upon y, 3 upon x equal to 6. Similarly, divide this one also by the same xy. What we are getting? Now the same as the previous sum. 1 upon y equals to a, 1 upon x equals to b. Now substitute here. 6a, 3b equal to 6, 2a, 4b equals to 5. This one is 2, this one is 6. We want to make them equal. So multiplying this one by 3. What we are getting? 6a, 3b, 6, 6a, 12b, 15. When signs are same, coefficients are same, we have to subtract. That's why minus, minus, minus. What we are getting? Minus 9b, minus 9, b equals to 1. When b equals to 1, substitute in the first one. 6a plus 3 equal to 6, 6a equal to 3, a equals to half. Now when you know the value of a and b, but what was our aim? Our aim is to calculate x and y. So substitute again b and a here. 1 upon y equals to a. So y equals to 2. 1 upon x means b. That is 1. X equals to 1. X equals to 1 and y equal to 2 is the answer. Correct? In the same way, we can complete the questions based on reducible. It means we have to make the equation in the proper form. The next is a board question. This time 1 upon x plus y and 1 upon x minus y. So suppose 1 upon x plus y whole as a and 1 upon x minus y whole as b. Just to make the standard form. Now it is 10a 2b equals to 4, 15a 5b equal to minus 2. Very simple.
We want to make these two equal. So multiplying by 5, multiplying by 2. Equation number 1 multiplied by 5. Equation number 2 multiplied by 2. What we are getting? 10, 5, 50a. 10b, 20. Multiplied by 2, 30a. Multiply by 2, multiply by 2. ध्यान रखना है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. जस्ट चेक इट 2 times. नाउ साइंस आर डिफरेंट, कोफिशिएंट्स आर सेम. क्या करना पड़ता है? यू नो वेरी वेल. एडिंग 80a equals to 16. So a equals to 1 by 5. Now when a 1 by 5, substituting the first one, 10a 2b equals to 4. So 2b equals to 4 minus 2. That is 2b equals to 2, b equals to 1. Now we have a and b. अभी पूरा नहीं हुआ है. Yes, हमको x और y निकालना है. So now what is x? How to calculate x? We have a is 1 by 5 and b is nothing but 1. If you cross multiply, what we are getting? X plus y equal to 5. Cross multiply, x minus y equals to 1. Now you know, is a simple question of the first exercise. If you add these two, 2x equal to 6, x equal to 3. When x equal to 3, substitute here, y equals to 2. And the answer. Board का question है 4 marks का. Easy? Good. Now the next sum, fourth sum. 3a upon x. Difficult one. Why? जब भी a और b कुछ आ जाए नंबर्स के अलावा तो बच्चे क्या सोचते हैं ये डिफिकल्ट हो गया. It's not like that. 1 upon x अपने काम का है. So suppose 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b. अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया? 3a x. a is already here, that's why we'll take p and q. नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है. Let 1 upon x equals to p. So this question is now 3pa plus minus 2bq equals to minus 5. Next one, ax plus 3bq equals to 2. Which variable we have to calculate? What we assume? P and Q. It means we have to calculate the value of P and Q. We want to make P and Q equal. Either this one or this one. Here it is 3PA. Here it is PA. So if you multiply this one by 3, what we are getting? 3PA 2BQ equals to minus 5. 3 से multiply करो. 3PA 339BQ equal to 6. When signs are same, you have to subtract. Minus 11BQ equals to minus 11. So our aim is to calculate Q. So Q is nothing but 11 cancel out 1 upon B. Now when you know the value of Q, substitute in first or second, your choice. Q equals to 1 by B. PA 3B 1 by B 2. So PA equals to minus 1. So P equals to minus 1 upon A. पूरा नहीं हुआ अभी. We want to calculate x and y. Now substitute the value of Q. Q means here 1 upon x means P. Cross multiply, x equals to minus A. Correct? Q means 1 by y equals to 1 by b. So cross multiply, y equals to b. Our aim is to calculate x and y. Hence these are the answers of x and y. Yes? Good. अब हम आते हैं एक दो और क्वेश्चन ऐसे जिनमें लिटरल कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, यानी कि क्या नंबर्स नहीं है और कौन दिया हुआ है a b c p q कुछ भी दे दिया x के साथ में, निकालना तो हमको x ही. तो क्या होता है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है
कोई टफ की बात नहीं है, करना हमको वैसा ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू सेम एज x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट एंड नंबर्स। नंबर्स की जगह कौन है? कांस्टेंट्स हैं a b। सेकेंड इक्वेशन, इफ यू ओपन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स एंड a प्लस बी इंटू वाई एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 और 2010 सीबीएसई का पुराने पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, तो घबराना नहीं। नाउ यू सी दैट a प्लस बी वाई एंड a प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट्स आर सेम, y कोफिशिएंट सेम, साइंस आर सेम। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। These two cancel out. What we are getting? X common inside the bracket. A minus B, open the bracket with minus, nothing. Minus A minus B, open कर दिया. Equals to this side. A square and A square cancel out. बचा कौन? Minus 2AB and minus 2B square. Easy. थोड़ा ध्यान से करना बस. This is nothing but A and A cancel out. Minus 2BX. And here minus 2B common. So what is remaining? Minus 2b out, a plus minus 2b out, b. Minus and minus cancel out, 2b and 2b cancel out, x equals to a plus b. When x equals to a plus b, substitute in the first one or in the second one. अपन first में substitute करते हैं. So x a plus b here, it will become a square minus b square plus y into a plus b equals to a square minus 2ab minus b square. A square minus b square and a square minus b square cancel out. So y equals to nothing but minus 2ab upon a plus b. अब बताओ कहाँ टफ लगा? A and B are the answers. Simple. थोड़ा सा ध्यान से तो करना ही है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो क्वेश्चन तो थोड़े बढ़िया बढ़िया आएंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया। दो तरह के क्वेश्चंस किए आज हमने, एक तो रिड्यूसिबल वाले और एक लिटरल कांस्टेंट वाले। तो आज का होमवर्क नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस। इट मींस 30 मिनट्स, 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 5 मिनट्स फॉर चेकिंग रिवीजन। तो मिलते हैं अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 लेक्चर्स और लेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मगर तब तक पुराना रिवीजन तो करना ही है, ठीक है? मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक केयर, गुड बाय।